वो आएगी पर वाटर टर्म में चीज़ नहीं आ रही, ये तो मैं डालूंगा वो कोई मेहरबानी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा, क्योंकि मैंने बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने एज ए सेनेटर में 12 बिल्स एज ए प्राइवेट मेंबर मैंने टेबल किए थे, उसमें से 4-5 अभी लॉ ब्लेंड है, ठीक है, जिसे नेशनल बिल सेनेट के पास। तो इस हिसाब से मैं आपको ये जो आपकी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं शीरीन मुस्तफ़ा साहिबा, वेरी गुड लेडी, अपराइट, फाइन लेडी, और आपको ये करना है कि बच्चे भी सबको पता चले, क्योंकि कल आप ही इस जगह पर आएंगे। मिसाल के तौर पर आज आपका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है आपका ये, और सिंध यूनिवर्सिटी के भी लोग आए हैं, एक लेटर लिखेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, जिसमें आप कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लेजिस्लेशन करनी चाहिए इस हवाले से जिसमें ये सब चीज़ें कवर हों। अब उसके बाद जो होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं लॉ डिपार्टमेंट है, या आप कनाडा में रही हैं, या ये सब यहाँ वर्दी प्रोफेसर साहबान बैठे हैं और फैकल्टी मेंबर्स बैठे हैं, फैकल्टी की डीन बैठी हैं, वाइस चांसलर साहब बहुत वर्दी तजर्बेकार आदमी हैं, उसको आप देखें, जाएँ गूगल पर चेक करें कि अमेरिका में ऐसा बिल है, कनाडा में है, हिंदुस्तान में है, फलानी जगह है, उनको 3-4 निकालें। आप एक कमेटी बना दी जिसमें 4-5 पेज का होगा, लॉ डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी लॉ इज़ वेरी फाइन पर्सन मिस्टर बलोच साहब, उसको मैं कहता हूँ थोड़े आप 10-15 दिन कोशिश करें, और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट को आप दें, ये सेक्रेटरी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे भी आप बता दें, मैं भी विकल्प दे देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, सरकार अपनी तरफ से ये बिल जो है टेबल करे असेंबली से, उसमें बिल पास होने से क्या होगा, फिर बच्चों ये सुनो, अगर बिल पास अगर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है सोशल वर्क, तो ये जो आप कहते हो ना बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी नौकरियां हर डिपार्टमेंट में खुल जाएंगी। अभी सिंध असेंबली को बहुत क्रेडिट जाता है, बहुत सी लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने ही की है, तो ये अगर आज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है कराची, आप उसकी डिपार्टमेंट हेड है, आप लोग हेड हैं, और सिंध यूनिवर्सिटी के भी लोग बैठे हैं, वो अगर लिख कर देंगे लाते हैं, वो भले अपनी तरफ से तैयार करें, आप अपनी तरफ से तैयार करें, क्योंकि ये बिल्स जो लेजिस्लेशन बनती है वो कलेक्टिव विजडम के तहत बनती है, फिर यहाँ जाती है, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाती है, वहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं, नुक्तामारी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ती है बड़ी। मगर ये कि ये जो सेक्रेटरी साहबा है, शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, और इसके होते हुए ये चीज़ हो जाए अच्छी बात है, और इतना बड़ा काम नहीं है, थोड़ा आपका टाइम जाएगा। मैं बस आपको मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे याद किया, इराकी साहब को पूरा जो है अच्छा मौका दिया है इस यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथन करें। आज मुझे पता चला कि ये छोटे भाई हमारे साथ रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ और पेसिमिस्ट नहीं हूँ, और ये प्रोग्राम उन्होंने किया है तो मुबारकबाद हो, और इन चीज़ों में मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। My students and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am very grateful to all the respected guests, video presenters from different fields of social work, faculty members and students for organizing this kind of conference and for sharing their intellectual input regarding the role of social work in sustainable development in Pakistan. Social work helps relieve people suffering, fight for social justice, and help improve the lives of people in different communities. Most people think of social workers as those working for only poverty alleviations and child welfare. It is true that many social workers do that kind of work, but they do a lot more than that. People from the different segments of societies need social workers' help. Social workers not only need to have a profound understanding of specific theories,
but also familiarity with local issues in order to work up efficiently with all services user group in specific communities. Since the primary aims of social work is to empower communities, social workers have to have the skill required for problem solving. As I saw all videos from different fields of social work, child protection, medical setting, addiction field, and social workers' engagement with the differently able people, I must say that they are doing a wonderful job serving humanity in the true sense. I would like to congratulate all participants and the respected and honorable guests for their gracious presence and for sharing their intellectual input regarding the theme of the conference. And last but not least, I would like to appreciate all my faculty members of the social work, especially Dr. Farhana Sarfraz. So I was very much impressed by the introduction given by Sakina, why she wanted to be a social worker and what social work is. But it says, I have a question. Why you want to be a social worker? कोई एक जवाब दे सकता है? Why you want to be a social worker? To serve the community. To serve the community, blah blah blah. I want to be a social worker to make a difference, right? To change, to work as an agent of change in society, right? So unfortunately, I failed to get admission in social work, so I studied political science, and then I studied the management sciences, and we talk about the different aspects, right? But I think social work and its role in the context of Pakistan is very important. Right? I may have a written speech tracing the history, how we started social work, but I'm more interested that what is the position we have of social work at present situation. These are the prerequisites. If you claim yourself to be a profession or a professional, there are going to be regulatory bodies, whether in the name of registration or licensing, right? I'm a student of management, so we tend to focus about registration and licensing, right? So go to the definition, the difference between the licensing and registration. The licensing is more difficult as compared to the registration, right? So she talked about the registration and licensing and the regulatory bodies. Yes, I totally agree that we're supposed to have indigenous models, not only in terms of regulatory bodies, but for everything there is a need to have indigenous model. Whether I talk about technology, right? You need indigenous technology. If I'm talking about the problem of the prerequisite है कि हम एक दूसरे को इंसान हैं. And once we have this value in our society, then I don't see any problem in term of justice. There is important aspect as being a social worker. You talk about the justice का जो है बड़ा मसला है. हमारे साथ भी law मौजूद है. We talk about the criminal justice, so on and so forth. So human values are important. तो आफरीदी साहब ने कहा कि कोई डेनमार्क में क्यों नहीं पैदा हो गया, कोई स्कैंडिनेविया में क्यों नहीं पैदा हो गया. But you see the justice system they have. We may criticize the Western values, but at the same time, we must appreciate the values, the good values which we prevail in the Western society. And that is about हमारे इमरान खान साहब कहते रहते हैं rule of law. Right? The rule of law not in terms of political context. Rule of law is the true spirit. एक बच्ची ने सवाल पूछा था यहाँ पे बैठे हुए कि about being a social worker, whether we should follow the Islamic values, the religion or the Western model, right? Being a social worker, there is only one model. That is to serve the society, to serve the humanity, to serve the public. So there is विजय कर जाते हैं
aspect say, Islam is a religion of peace, there is no doubt about it. Islam is a religion of equality. Islam is a religion of justice. And if you talk about the Western model of social work, they talk about peace, they talk about justice, they talk about equality. So I think there is no ambiguity in terms of whether we talk about the Islamic model or the Western model. Basic thing is the essence is important. The spirit is important. If you have the essence, you have the spirit, then you are going to be successful. Which is part of our religion as well. So honesty, integrity, professional ethics आपके जो है वो बहुत strong होने चाहिए. I hope you could keep more long.